हे एवरीवन, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन 57। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें एक डेटाबेस रिलेशन आर दिया हुआ है विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। एंड दीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर गिवन, जिसमें ए डिटरमाइंस बी सी एफ, ई डिटरमाइंस डी जी एंड बी सी डिटरमाइंस ए, ठीक है। ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमको दी हुई हैं। एंड देन वी हैव टू say that if A is the only candidate key of R, A comma B C are the candidate keys, or A comma B C comma E are the candidates key, or this relation is on BCNF or not. Okay, so what is the candidate key? So candidate key is the attribute which can fully determines the table, or which can determines all the other attributes of the table, that is called the candidate key, ठीक है। तो ये पता करने के लिए we can फाइंड द क्लोजर ऑफ ईच ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। तो हम ए का, ई का और बी सी का क्लोजर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। सो ए डिटरमाइंस बी सी ई एफ, ओके, एंड ई डिटरमाइंस डी जी एंड ए डिटरमाइंस ई। सो उस प्रॉपर्टी से ए ऑल्सो डिटरमाइंस डी जी, ठीक है, एंड ए ऑल्सो डिटरमाइंस itself. So A determines ABC, DEF, DEF and G. Okay. So A determines this whole, all the attributes of this table R. Okay. So A plus is a candidate key. Okay. Now let's see for E. So E determines E obviously, and E determines DG, but no other attributes. Okay. So this is not a candidate key. Then BC. So BC obviously determines A, and we have seen that A determines all the attributes. So same here, BC will determine all the attributes. So BC is also a candidate key. Okay. So option 1 is incorrect, option 2 is correct, option 3 is also incorrect. Now for BCNF or Boy Scout normal form, क्या होता है कि if some attributes X determines Y, then for any non-trivial dependency, X should be the candidate key. Okay, X should be the candidate key, or Y should be a subset of the candidate key, but that is for the trivial case. Okay, तो अगर हम इन तीनों ऑप्शंस में देखें, so A determines B C E F, here X A is a candidate key, so this will satisfy the BCNF. If we see here, BC determines A, here also BC is a candidate key, so yes, this also satisfies BCNF. But if you see here, E determines DG, here E is not a candidate key, neither this DG is a subset of a candidate key. Okay, so this does not satisfy BCNF. So yes, relation R is not in Boy's code normal form or BCNF. So this option is also correct. So the correct options are B, D.